introduction of the sir, and then we can start with the session. So, Professor Dr. Raman Mittal is a professor at Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. तन्वी जी बहुत है, काफी है, प्लीज दैट्स एनफ ऑफ इंट्रोडक्शन. तो मैं शुरू करूं आपकी इजाजत हो तो. Yes, sir. Actually, it's a formality. My participants also wants to know that मैं खुद बता दूंगा अपने आप. मुझे ये बताइए कि कैसे पीपीटी कैसे शेयर करनी है, बताइए. हाँ सर, हम आपको प्रेजेंटर बना देंगे अभी. सर इज अ होस्ट. सर यू कैन प्रेजेंट योर पीपीटी सर. ओके, ऑलराइट, लेट मी सी हाउ आई कैन. There's a share option, and from there. Can yes, you? it is coming, sir. Yes, sir, it is coming. Yes. Okay. You can see. Okay, thank you. All right. So, thank you very much for inviting me, and sorry for the delay on my part. And I would now like to start with a lecture. Okay, so I'll be talking about artificial intelligence and copyright law in India. And I would like the lecture to be interactive. And I hope that you would be able to ask questions in between. And I'll also ask questions, so you will be able to respond. I hope that facility is there. Okay. All right. Now, this is the brief synopsis of what I'll be speaking about in the next 55 minutes or so. The process of creation of works by artificial intelligence, authorship of AI, and who owns the works created by AI, the requirement of originality, how to apply fair dealing vis-a-vis creativity by artificial intelligence, and in what circumstances can we say that works created or generated by artificial intelligence amount to copyright infringement, and what are the remedies for infringement of works created by artificial intelligence. So we all know that creativity, when human creativity, because as humans we have been creating always. So even 10,000 back rock paintings, 10,000 years back rock paintings, so that means creative from the very beginning. But when creativity, your human creativity met with technology or intersected with technology, it created conditions for sprouting of first copyright laws. And ever since then, copyright has been subjected to various amendments, modifications, enlargements in scope, ambit, everything. And we have the present law. So it's basically copyright is said to be the child of technology. Why it is called the child of technology? Because, as I said earlier, we have been creating since long. However, we did not have a law like copyright in the days gone by. The first copyright law appeared some 300 years before. And why the copyright law was born only 300 years before and not before that? Only in 1709 and not before that. So the reason was technology. So when technology, the first technology which had something to do with copyright was printing press. So when printing press came, then we had to make some law. It was an outcome. It was a response of the society because people were free to print and publish and sell the works of others. So in order to remedy this situation, the first copyright law was in England. So ever since, copyright law has been responding to various challenges posed by different kinds of technologies which intersected with human creativity in some way or the other. For example, then camera came, then photocopier came, then computer came, then internet came. So we have been able to adjust, adopt, and adapt. So when internet came, for example, and it became popular some 25 years back, then people felt that it is like the death of copyright. That means copyright will no longer be relevant. Many people felt at that time, and you can all read the articles written in 1998 or 2000. So people were predicting that now copyright will not be relevant
any longer. However, copyright has also absorbed the impact of the digital technologies. Now, similar to that, we are in the midst of another revolution, and that revolution is the revolution created by artificial intelligence. Artificial intelligence. Now, it seems like a misnomer. Can intelligence ever be artificial? In what sense can we say that whatever is there, whatever machine is there, artificial means machine, man versus machine. So, whatever, if something falls in the domain of artificiality, in the domain of machine, how can we call it intelligent? That is the fundamental question. We will see during the course of the lecture whether it is just to call it and if it is indeed intelligent, then of course it can create. We have to go deep into the process of creativity by AI. Of course, today so many works are presented as being created by artificial intelligence, but are they really created by artificial intelligence? We have to examine for ourselves. There are no clear answers as of now. The whole world is still grappled with these issues. How to relate AI with copyright law. Now, generative AI. Generative artificial intelligence has significantly altered the way we create and consume copyright works in just a few months, just a few past months. Now, what all can be generated by artificial intelligence? It can generate, what are the works that are protected by copyright? Copyright protects literary, dramatic, musical, artistic works, sound, and these are categories of works mentioned in section 13 and 2Y of Copyright Act. And in case anybody wants copyright protection, he or she must fit his work into any of these classes. Now, going back to AI, can AI generate all these classes of works or some of these? Yes. Would anybody like to respond to this? What is the scope of AI? Can AI create all these works or no? Yes. Yes, yes, sir, possibly all of them. Yeah, it is. So what we find, of course, yes, all these categories of works can be generated by artificial intelligence. Some of these we will see, others we can't because I have not tried, and then it will take a long time. So today what we find is a deluge of AI generated text, images, music, documentaries, or whatever, name it, and find here on internet on how to create these works. So let us see. A few days back, what I did was I told Bing that I prompted. I gave an input. Prompt is an input. I gave a prompt. The prompt was a cat driving a car in New York, and I wanted an illustration for that. This is exactly what I typed in Bing. A cat driving a car in New York in illustration format, right? I just wrote illustration. And within seconds, it gave me so many pictures in front of you. So see how it doesn't take time. It's just a matter of seconds. And that too, second means that it is the internet speed and everything. So it is almost instantaneously. It is generating. Now, let us see. Then I modified my request, my prompt. I said a cat driving a car in New York. Illustration in Van Gogh style. Now, I am a cat. I want a car. I want a city of New York, in New York. Can you see all these things in the picture? Can you see? You can see cat, you can see car. Can you see New York? No, sir. No, sir. The skyline might represent New York. Of course, yes, it represents New York because see, there are tall buildings. You can see those buildings outside the window of the car. All right. And then I said that I want it in illustration format, and that's of Van Gogh, right?
So many things. Now imagine this picture must never have been drawn. कभी इसे बनाया नहीं गया होगा, ठीक है ना? इतने सब इसमें इतने सब वेरिएबल्स, इतने सब फैक्टर्स डाल दिए गए हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले कभी बनी हो. But AI makes it in a flash. Isn't it amazing? Well, it is. Then what I said, a cat driving a car in New York in Van Gogh style. I said, no, change the format. I want not illustration, but line drawing. Take it. All right. Then I said, okay, a different thing. I said, a crow drinking milk on a mango tree. Here it comes. Okay. So then I said, a crow drinking milk on mango tree in the style of artist Manjeet Bawa. So it gave me that one. Now, how is it able to generate all that? That is the question. It knows Van Gogh, it knows New York, it knows a crow, it knows mango tree, it knows milk, right? So it knows all. I know it. Whatever I have put a request on, the AI gives it. Then I say I modify it, that give me black and white. It gives me black and white, not one, but so many images it gives in one flash, right? Then say, let's turn to a different realm. I said, write a poem on sunrise in the style of Rabindranath Tagore. Okay. Now, does AI know Rabindranath Tagore? Of course, it knows sunrise. It knows what a poem is. It should have a rhyme. Tell it, AI, but it has rhymed it itself. Now, it also knows Rabindranath Tagore. It has read the poems of, Rabindranath Tagore has written 6,000 songs and poems. So it has read through the works of Rabindranath Tagore so much that it knows. And then what does it mean? This AI is not copying this poem, which looks attractive. Now, if we read it just a little, as the night's clock is gently, a golden tale begins to unfold. Told, a symphony of colors, the dawn a herald. Awake, O souls, to nature's embrace. As the first ray of light caresses your face, the world awakens and whispers its signs. The song of the morning, the joy it brings. So, see, the words, now what it has done, what I could fathom is that it knows the poems of Rabindranath Tagore. So it knows the words. Every person, every poet, every scholar has a kitty of words with him, has a diction. He tends to read those words, those phrases, those expressions in all his works. Now, so is the case with Gurudev Rabindranath Tagore. So he uses the words awake so many times because he wanted to awaken the masses of this country, of our country. So he would say, oh souls, awake, awake. So those favorite words it has picked and it has sewn those words together in some meaningful way. When you read this, म्हटलंय गुगल लिंक कुठं पाठवणार आहे? did you say something? No, sir. Please continue. Okay. So now you see this, if you read it carefully, this poem may look attractive in the first blush. However, when you read it carefully, then we will see that there are so many gaps. Some things are totally meaningless. But anyways, judging from the standard of a machine, it looks quite attractive, especially the part of writing that it does well. Okay, now the thing is, how is it generating these words? That's the question we must pose ourselves. What do you think? Now, think, because imagine that this is a machine. And why imagine? We know that this is a machine. So how is it able to generate these works, pictures and songs? Would you like to say something on this? Unless we go the process of creation, we will not be able to apply the law to it. आप बताइए कैसे create किया होगा? Or to put the same question. Yeah, please go ahead. It has gathered or else it knows everything which we have typed. It has all the information which we want
and all the styles which we want it in. So the input which we are putting, like writing a poem in the style of Rabindranath Tagore, it knows how to write a poem. It has studied the works of Rabindranath Tagore. Combining both the information, it has given its own output in a unique way. Mhm. Okay. Yes. Anybody else? What about the pictures like this? So the thing is that it has not, AI has not copied from a single source. That much we know. Now, how many cats are there? There would be thousands or millions of pictures of cat on the internet. Now, it would take us a lot of time maybe to go through these pictures, but for a machine with that kind of a speed, it won't take much time. It will take milliseconds. So it is not, when it's drawing a picture of cat, the machine, the AI, is not taking any single picture of cat. This cat, the machine may have combined so many elements from different cats, not even eyes from a single cat. Right? It is copying, if it is copying, then it is copying very small fraction from thousands and thousands of pictures. All right. And it has got an uncanny capability to combine all those elements in a meaningful law, right? Because it knows what a cat is. So it knows the figure of cat. For example, now in mathematical terms, if I may say that if the sum of 100 of a particular thing to be called, if, for example, something to be described as cat should be equal to 100, then in some way the machine will make it 100. All right. हमें 10 नंबर को इकट्ठा करके 100 बनाना है, हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है. मशीन के लिए उन सबको कन्वर्ट कर देना नंबर्स में और उसके बाद रिकन्वर्ट कर देना इमेजेस में कोई मुश्किल काम नहीं. ठीक है ना? अल्टीमेटली द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू दैट द मशीन इज डूइंग वंडरफुली वेल. All right. So this is in brief the process of artificial intelligence, right? Anybody would like to say anything about the process of creativity, or should we move on to law? Things are right. You can move. Okay. Now, how AI generates? Now, these generative AI programs are trained to generate such outputs partly by exposing them to large quantities of existing work. AI works by identifying and replicating patterns in data. So, in order to generate an output like a written sentence or picture, it must first learn from the real work of actual humans. There is no other way, because we have tried, and in the few examples that I depicted on the screen, that so many values were given and AI derived a picture from all, taking into account all those values. So it knows that their output are simply a culmination of human-made work, much of which has been scraped from the internet and is copyright protected in one way or the other. If an AI image generator produces art that resembles the work of artist Manjeet Bawa, for example, that means it had to be trained using the actual art of Manjeet Bawa, or it trains itself. Similarly, for AI to write in the style of J.K. Rowling, it has to be trained with the words and work. Now, we are just trying to understand the process of creativity by artificial intelligence. Now, they say that they are being trained. Now, the proprietors of artificial intelligence say that they have trained their machines, or AI is trained on, is not copying. When it is, they are countered that you are copying works to generate your works. The generated works may look different, but it is copying anyway. To this, the that well, their artificial intelligence softwares or machines are not copying. Why they are not copying? Then how are they able to generate it? Because they say that they have been trained. Now, what is the process? Is it just a juggling of words?
can you get away from the claims of copyright infringement, charges of copyright infringement, by simply saying that, oh no, we have been trained and now we can do anything? Now, even if training, say for example, a person reads a particular novel which has just come to the market, and the person is he has such a great memory that as he reads, he memorizes it. Then he is asked to do something without copying. He writes the same novel word by word of himself, culling out of his memory. Now, if he does so, can we say that his action is copyright infringement or not? What do you think? एक नॉवल को पढ़ लिया, उसकी याददाश्त इतनी अच्छी है, उसने सब याद कर लिया और उसके बाद लिख दिया उसे, क्या वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा? बताइए. If it is verbatim the same, sir, then it is not a copyright. Then it is. It is an infringement, yes. Yes, It is Yeah. it is an infringement. Now, अगर Yes. वो आदमी ये कहे कि जी मैंने तो ट्रेनिंग ले ली अब उसके ऊपर वर्क पे, आई बीन ट्रेन्ड ऑन सो मेनी वर्क्स, तो अब तो मैं खुद से कर रहा हूँ ये काम. अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, उस आदमी ने, जिससे हमें भी ये एग्जांपल लिया है, उसने 5 नॉवल पढ़े और उसके बाद 6 नॉवल लिख दिया. उसमें जो नॉवल लिखा उसमें उन 5 से 20% ले लिया, ठीक है, क्या वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा? No, then it will become his copyright. क्या वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा? बताइए. No, sir, then it will become his work. That will still be copyright infringement if he is copying ad verbatim or copying the idea taken from all these books, novels. No, sir, I Yeah, disagree. so It will not be a according copyright. to the law, it will be copyright infringement, 100%, right? There's no doubt about it, because he is deriving from other works. He is writing from other works. All right. Now, let's just increase the number. पहला एग्जाम्पल में था, उसने एक नॉवल पढ़ा, वही लिख दिया अपना बताकर, ठीक है. उसने कहा मैंने फोटोकॉपी तो नहीं कराया, मैंने तो खुद से लिखा है. अब he is taking it out of his memory, ठीक है ना. उसके बाद हमने एग्जाम्पल को मॉडिफाई किया, हमने कहा उसने 5 पढ़े और 6 बना दिया. अब हम कहते हैं उसने 100 पढ़े और उसने 1 बना दिया, तो सब में से कितना लिया? 1%. इस नंबर को बढ़ा दें. अगर एआई इस मॉडल पर काम कर रहा है, देखिए, तो फिर तो इन्फ्रिंजमेंट होगी, ठीक है ना. Just because you have stolen a very minuscule percentage or part of each work will not take you out of the pale of copyright infringement. That is as simple. That is my take on it, right? Now, if that is one model that I have discussed, if there is another model, say for example, if I am asked to make a painting of, say for example, बहुत सारे लॉयंस की पेंटिंग्स देखी हैं, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट there is an impression of a lion in my mind. Say for example, I have seen 1000 pictures of lions till now, and based on those pictures I have generated an impression of what lion is. Now I'm asked to make a picture, and I make a picture, okay. Will that be an infringement of copyright? क्योंकि मैंने लॉयन कहाँ देखे हैं, मैंने शायद जू में देखे हैं, मैंने शायद फिल्म में देखे हैं, मैंने शायद पोस्टर्स में देखे हैं, मैंने बुक्स में देखे हैं, कई जगह देखे हो सकते हैं ना, मैंने एडवर्टीजमेंट्स में देखे हैं. सो बहुत जगह से मैंने इंप्रेशन गैदर किए और उसके बाद मैं बनाता हूँ. उन सब का कहीं ना कहीं मैंने उनसे सीखा ही है ना, अदरवाइज मुझे लॉयन का कैसे पता चलता? तो अगर मैं अब लॉयन अपना बनाता हूँ, तो क्या वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, इट विल नॉट. No, नहीं sir. होगा ना, ठीक है. Because No, there sir. is something in us, without going into the nitty-gritty of Hmm. copyright. I'll take you another example. ठीक है, let us take another example. दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि मोनालिसा बना दो, ठीक है. मान लीजिए अब मोनालिसा मैंने लूव्र में, जो लूव्र म्यूजियम है फ्रांस में, वहाँ देखी है, प्लस मोनालिसा मैंने कई किताबों में देखी है बनी हुई पेंटिंग, वैसे ही कई जगह एडवर्टीजमेंट्स में देखी है, फिल्मों में देखी है, ठीक है ना. 100-200 जगह मैंने देख चुका हूँ तक में, और मैं बेस्ड ऑन दैट मैं मोनालिसा को ड्रॉ कर देता हूँ जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी बहुत साल पहले. कैन आई क्लेम इट टू बी माई ओन वर्क? No, sir. sir. It does.
अब देखिए ये प्रोसेस तो सिमिलर रहा ना, जैसे मैंने शेर को नहीं किसी से कॉपी नहीं किया, ठीक है ना, मैंने बहुत से शेर देखे हैं, उसके बेसिस पर मैंने बना दिया, तो आपने आंसर किया, आपने उत्तर दिया कि नहीं जी ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी। लेकिन मैंने जब मोनालिसा बनाई उसी प्रोसेस से बनाई, तब आपने कहा कि नहीं वो मेरा नहीं। Because Mona Lisa is same everywhere, sir. Lions may be different at different Exactly. characteristics. Exactly. So this sense of copyright law we all have, and absolutely I entirely agree with you that Mona Lisa is there's just one Mona Lisa. ठीक है, दूसरे बनाने का स्कोप ही नहीं है उसका, ठीक है, तो मुझे एट्रीब्यूट करना ही होगा that this work is of Leonardo da Vinci and it's a copying of that. All right. So now we have to see how artificial intelligence is making these works. क्योंकि अभी हम AI को बोलेंगे कि आप म्यूजिक जनरेट कर दीजिए in the style of say Mozart. Make a musical composition in the style of Beethoven. So it will do that. It won't be the same, but it will copy some elements of the style because उसने म्यूजिक सारा ही सुना है उनका, इसे मालूम है वो कौन से नोट्स कब कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ एक क्वेश्चन ये है, हु कैन बी द ऑथर्स ऑफ वर्क्स और जनरेटेड। अब हमने थोड़ा सा देख लिया है कि आज के दिन तो सब AI से काम कर ही रहे हैं, तो नाउ वी नो what is generated by AI and what is we know something about the process, not everything. अभी चीजें इतनी clear नहीं है how AI generates. There are so many lawsuits, especially in America, which have been filed against AI. We'll discuss some of those lawsuits. Lawsuits में आगे सब हम देखेंगे उनको आज in the later part of the presentation. लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हैं कि who can be the author. Author कॉपीराइट लॉ में ऑथर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 2 में ऐसे दिया गया है, ऑथर मीन्स एन ऑथर ऑफ अ वर्क, दैट मीन्स द वन हु क्रिएट्स, जिसने उसे क्रिएट किया है वही ऑथरशिप के एंटाइटल्ड है। एंड वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस ऑन ऑथरशिप, लाइक इफ यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने कॉपीराइट लॉ पढ़ा है पहले? Yes, sir. ओके, Sir. तो आप Yes, sir. great. Then you have some other like Donog versus Allied Newspaper, University of London versus University Tutorial Press, ठीक है ना, उन सब के अंदर था क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल Donog वर्सेस Allied Newspaper, उसमें क्या डिस्प्यूट था कि एक स्पोर्ट्स स्टार था और उसने क्या किया, एक न्यूज़पेपर अप्रोच दैट स्पोर्ट्समैन जॉकी, ही वाज अ वर्ल्ड फेमस जॉकी, स्टीव डॉनग वाज हिज नेम। सो अ न्यूज़पेपर अप्रोच्ड हिम कि भाई आप हमारे लिए कुछ स्टोरीज लिख दीजिए। गिटार चाहते, उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं आपको समय की जरूरत नहीं है, वी विल हेल्प यू आउट। तो उन्होंने एक आदमी को भेज दिया, एक जर्नलिस्ट को, जिसका काम ही ये था लिखना, ठीक है ना। स्पोर्ट्समैन का काम था घोड़ा चलाना, वो तो एक जॉकी थे, तो उनको लिखने में बहुत माहिर नहीं थे वो। तो जैसे जैसे वो ग्राउंड में थे, कभी इधर बुलाते कभी उधर बुलाते, जो जर्नलिस्ट को बुलाते और अपनी कहानी सुना देते, और जर्नलिस्ट उसको कुछ जो बोलते थे उसको एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको पब्लिश करते जाते न्यूज़पेपर में। सो इट वाज पब्लिश्ड इन अ सीरीज। नाउ एट द एंड ऑफ द डे, द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज, व्हेन द डिस्प्यूट सो अरोज, द वर्क वाज हुज क्रिएशन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं इतने सन में यहाँ था, इतने ईयर में मैं यहाँ पर था, इस टर्फ में था, तो घोड़ा ने छलांग मारी, ये किया वो किया, दिस एंड दैट, यू नो, हिज एक्सपीरियंसेस ऑन द टर्फ एंड ऑफ द टर्फ, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कहानियां बना दी गई, उन्हें छाप दिया गया। अब क्वेश्चन क्या था कोर्ट के पास कि उन कहानियों का ऑथर कौन है, ठीक है ना। अब कौन होना चाहिए उन कहानियों का ऑथर, बताइए। स्टीव डॉनग जो स्पोर्ट्समैन है वो होने चाहिए, या जो जर्नलिस्ट है? Journalist, sir. Journalist. जर्नलिस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जर्नलिस्ट? क्यों? उसने, स्टीव डॉनग ने कहानी बोली, जो स्पोर्ट्समैन ने कहानी बोली, तो उसकी भी तो इनपुट है उसमें। Sir, he may be called the author, but the owner of that work would be the newspaper because it was ओनर done. की बात नहीं, हम ओनर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ ऑथर की बात कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क?
sports person should be the author. So that was the question before the court. So the court examined the sports person personally and said कि no, this is not your language. ये जो इसमें लैंग्वेज यूज की गई आर्टिकल्स में वो आपकी नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट की है, ठीक है। तो आपके चाहे आपके नाम में छपे हों ये लेख, लेकिन इसका हक, इसका कॉपीराइट का ऑथरशिप जो है वो तो जर्नलिस्ट के पास ही जाएगी। दैट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन दिस केस, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम एआई में इसको ट्रांसपोज करते हैं इसी सिचुएशन को। यहाँ हमने एआई को कर रहा ना, तो जो हमने पहले स्क्रीन पर देखा कि एआई को हमने बताया कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ कैट ड्राइविंग अ कार इन न्यूयॉर्क सिटी इन द स्टाइल ऑफ वैन गॉग इन द फॉर्मेट ऑफ लाइन ड्राइंग। हमने इतना कुछ बताया, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी भी तो कंट्रीब्यूशन है इसमें, मैंने जो बताया प्रॉम्प्ट उसी के बेसिस पर उसने जनरेट किया, ठीक है ना। तो अब आप इन सवालों का आंसर, इस सवाल का आंसर करिए, हु कैन बी द ऑथर ऑफ वर्क्स वो जनरेटेड बाय एआई। फर्स्ट ऑप्शन इज द यूजर हु ट्रिगर्स, जैसे कि मैंने ये पिक्चर्स बनाए। दूसरी ऑप्शन है द मशीन, कि एआई खुद से होना चाहिए। तीसरी ऑप्शन है द मेकर और ओनर ऑफ मशीन, मीन्स एआई, मशीन मीन्स एआई। बताइए अब इनमें से कौन होना चाहिए ऑथर। सर अगर मशीन को Owner of एट्रीब्यूट करते हैं तो मशीन का हो सकता है, लेकिन अगर मशीन को लीगल पर्सनैलिटी हम नहीं क्लोथ करते, सर if machine is attributed legal personality, then machine would be the owner. But whether machine is a legal personality capable of having rights and holding property, if that question is answered, that would be a probably deciding factor. Otherwise, the user who triggers would be the owner. ओके, और बताइए, एनीबडी एल्स। owner of the machine, sir. Sir, the user who triggers, yes. Sir, user who triggers. User who triggers. यूजर हु ट्रिगर्स। Yes, sir. I also Yes, sir. feel That will that be. user who triggers. और अच्छा, ये मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए ना, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं ऑप्शन, अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हैं आंसर इसका, जरूरी नहीं कि इन तीनों में ही हो जवाब। चलिए, एक मैं आपको ऑप्शन बढ़ा देता हूँ, अभी मैंने जानबूझकर नहीं लिखी थी। नोबडी इज द ऑथर ऑफ दिस वर्क, ठीक है ना, कि कोई भी नहीं है। अगर हम उस थ्योरी पर जाते हैं कि आपने जो देखिए, अगर आपने एक जगह से 1000 रुपये चोरी कर लिए, ठीक है, तो वो तो चोरी कहलाएगी। अगर आपने 1000 जगह से 1-1 रुपया चोरी किया, तब भी तो चोरी होगी, उसे चोरी ही कहा जाएगा ना, ठीक है ना, चोरी तो चोरी रहेगी। देखिए, तो जस्ट बिकॉज आपने बहुत ज्यादा चेंज द कैरेक्टर ऑफ द एक्टिविटी, तो हम इसके बेसिस पर ये भी कह सकते हैं कि जी देखिए, इसमें कोई भी ऑथर नहीं है क्योंकि ये वर्क ही चोरी का है। ये भी एक ऑप्शन है। तो बताइए, आपको ठीक लगती है ये ऑप्शन? ठीक है, चलिए। Sir, it is very difficult, sir. Very difficult. Of course, I agree. It is extremely difficult. Now the whole world is debating on these issues. AI ने सब कुछ हिला कर रख दिया है, सब टॉपसी टर्वी कर दिया, सारी थ्योरीज कर दी। तो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उससे ऐसा ही होता है, सब एकदम से बिखर जाता है। फिर हमें उसको देखना पड़ता है कि कैसे हम री-एग्जामिनिंग ऑल द थ्योरीज दैट वी वर सो पीसफुली अप्लाइंग, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड नाउ, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा और देखते हैं, हम लॉ पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एआई जनरेटेड वर्क। सो सेक्शन 2D डिफाइंस हु एन ऑथर इज। सो अब इसमें देखिए, बहुत जगह वैसे तो सिंपल डेफिनेशन है, ऑथर मीन्स इन रिलेशन टू अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क द ऑथर ऑफ द वर्क, इन रिलेशन टू म्यूजिकल वर्क द कंपोजर, इन रिलेशन टू आर्टिस्टिक वर्क द आर्टिस्ट, ठीक है ना, इन रिलेशन टू फोटोग्राफ द पर्सन हु टेकिंग द फोटोग्राफ, ठीक है। तो हम इसमें सारी डेफिनेशन को अगर हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो इसमें व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट इट इज पर्सन सेंट्रिक। तो हर जगह पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हम एआई को एक पर्सन बोल सकते हैं आज की डेट में? कैन वी कॉल एआई अ पर्सन और अ टूल?
Is ये it a tool, person sir. or a tool? Class 6. It's One tool, by- sir. So, हाँ sir, tool, तो sir. मतलब Sir, ये है class क्लॉज 6 सिक्स has भी some या applicability. ऑल राइट क्लॉज सिक्स में भी यही है ना, द पर्सन हु कॉज्ड द वर्क टू बी क्रिएटेड, ठीक है ना, हु कॉजेज द वर्क टू बी सो क्रिएटेड, यही लिखा है ना सिक्स में। तो हम मतलब जो हमने कानून बनाया कॉपीराइट लॉ, तो हमने सिर्फ यही देखा कि पर्सन को ही मिलना चाहिए कॉपीराइट, मशीन को नहीं। तो अगर हम इस पर्सन पे बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं तो हम एक ऑप्शन तो हमारी कट जाएगी ना इसमें, तो मशीन तो हम हटा ही देंगे, फिर हमें पर्सन पर ही जाना पड़ेगा, ईदर द वन हु ट्रिगर्स और द वन हु इज एन ओनर ऑफ, ठीक है ना। तो हमारी कट जाती है अपने एनालिसिस को, ठीक है। अब अगर हम सेक्शन 16 को देखें कॉपीराइट, उसमें भी नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉपीराइट, यहाँ भी पर्सन की बात की गई है, ठीक है। या तो हम कानून को बदलें, अगर यही कानून है तो फिर तो हमें पर्सन को देखते हुए हमें एआई को हटाना पड़ेगा वहां से, चाहे हम ये देखना पड़े कि एआई के पीछे कौन है, द यूजर, द ओनर, द क्रिएटर, तो हमें पर्सन पर ही जाना होगा, ठीक है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज देखें ऑफ क्रिएटिविटी, देयर आर बेसिकली 3 strands of justification for copyright or intellectual property. First is the labor theory. It assumes that people are entitled to own property rights based on the labor they put. अगर उन्होंने मेहनत की है लेबर की, दिस इज द लेबर थ्योरी, ठीक है, तो उनको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि एआई ने मेहनत की, मुश्किल होगा सेल्फ यूज क्रिएशन एज एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है ना। सो क्या एआई के पास पर्सनैलिटी है, वो भी मुश्किल होगा आज हमारे लिए। Then the third theory is the reward theory, which considers IP rights a fair reward for enriching the society. So what unites all these is anthropocentric reasoning that intellectual property is awarded to humans, right? Again, continuing with theories, they are based on assumption that authors are human beings. The question to be considered is whether originality of work must be traced back to a human entity. So these are theories that need to be applied to AI. If an intelligent agent or AI acts entirely autonomously and makes all the decisions with regard to the works it produces, such self-will may thus establish its personality. So this is an argument in favor of AI. Some decisions made by AI are instinctual and unexplainable. In such circumstances, it may be argued that the intelligent agent does tempt the work with its personality. Okay. Now, these are the arguments in favoring that AI should itself be the author and owner of works. Now, a somewhat similar situation arose sometime back in America, and you must have heard or read about this case, Naruto versus Slater, where a picture was clicked, a photograph was clicked by a monkey. The camera was left in the presence of monkey in his cage or in his enclosure, and he just happened to click. And when he turned out to be a photograph of his own self, that means a selfie, which we call a selfie, right? So the question was, who should be the owner of or the author, first the author of that photograph. ये photograph तो आज हमारे पास है, देखिए इन सब सिचुएशन में एक चीज है कॉमन कि हमारे पास वर्क है, अब हमें ढूंढना है उसका ऑथर कौन, ठीक है। अब पिक्चर तो हमारे पास, फोटोग्राफ तो आ ही गई, अब इसका ऑथर कौन होना चाहिए, जिसका कैमरा था वो होना चाहिए, कैमरा बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए, जिसका वो होना चाहिए, मंकी ही इसका ऑथर होना चाहिए, कौन ऑथर होना चाहिए बताइए। जिसका मोबाइल था वो, जिसका कैमरा था वो, कैमरा था, जिसने खींची फोटो वो, किसने खींची, यही तो बात है, मंकी ने खींची फोटो तो मंकी ने, हाँ मंकी ने Yes, sir. Yes, sir. मंकी कोई दे दे,
Because according to definition, a person who is user or who is आपने जो डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन ही बोल रही है सर कि जो पर्सन स्पेसिफिकली जो ये कर रहा है यस सर अकॉर्डिंग टू एनिमल्स को पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट जितना मेरी जानकारी है अभी तक नहीं दिया गया है शायद। नहीं दिया है। तो इसलिए ये पर्सन है क्या पहले फोटोग्राफर? The camera, the owner of the camera, sir. Owner of the Human will camera, be the okay. Owner Now, of the camera, sir. अच्छा, इसकी बहुत सी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये तो एक सिचुएशन हमारे सामने है, मैं आपको एक और बताता हूँ कि मैंने एक कैनवस पर कुछ रंग बिखेर दिए हैं, ठीक है, कुछ पेंट्स कुछ रंग मैंने बिखेर दिए हैं और मैंने अपनी बिल्ली को कहा कि इसके ऊपर कूदो कैनवस पर, और बिल्ली उस कैनवस पर कुछ कूदी। उससे क्या हुआ कि रंग अपने आप से किसी पैटर्न में आ गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में तो आ ही जाएंगे, उसके बाद रंग सूख गए। अब वो पेंटिंग जो है मैंने एग्जीबिशन में लगा दी और वो बिक भी गई, मान लीजिए, जस्ट सेइंग, ऐसा होता है बहुत बार। अब वो पेंटिंग किसने बनाई? बिल्ली ने बनाई Owner. या मैंने बनाई? नो सर, आपने, क्योंकि वो आइडिया आपका था ना, बिल्ली के माइंड में तो कुछ भी नहीं था, वो उसको मतलब बनाने के बाद भी पता नहीं कि उसने क्या बनाया और क्या किया कूदने के बाद। तरह से पर सर, इसी जिसने तरह से बनाया, फोटोग्राफ में सो ठीक है ना, तो हम इन सब चीजों को एआई में भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, करना ही होगा, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, the court in US stated that US Copyright Act does not expressly authorize animals to file cases for infringement. That means they cannot be owners. That's how it was decided. All right. But our point of discussion today is a little different. That is authorship by AI. Now, the works created by humans using generative artificial intelligence could arguably be entitled to copyright protection depending on the nature of human involvement in the creative process. ठीक है, मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग ने भी कुछ किया है और एआई ने भी कुछ किया है, एक मिक्सचर है। इफ अ मशीन एंड ह्यूमन वर्क टुगेदर बट यू कैन सेपरेट व्हाट ईच ऑफ देम हैज डन, देन विल ओनली फोकस ऑन। बहुत बड़े कॉपीराइट के एक्सपर्ट हैं डैनियल, प्रोफेसर डैनियल गर्वेस, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखिए, मैंने उनका ही कोटेशन दिखाया आपके सामने। If a machine and human work together, but you can separate what each of them has done, then copyright will focus on the human part. ये डैनियल गर्वेस ने बोला है, ठीक है ना, कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या है हम उस पर ही फोकस करेंगे, मशीन पर तो हम छोड़ देंगे। और if the human and machines contribution are more intertwined, a work's eligibility for copyright depends on how much control or influence the human had on it. It really needs to be an authorial kind of contribution. In that case, the fact that you worked with a machine would not exclude copyright protection. That is what is mentioned by Daniel Gervais again. So what he says is कि अगर ऐसा मिला जुला वर्क है, आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या ह्यूमन बीइंग की कंट्रीब्यूशन और क्या मशीन की कंट्रीब्यूशन, तब हम उसको दे सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसी कंट्रीब्यूशन लगे कि ऑथर जैसी कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने अब, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल्स ऑफ द जनरेशन व्हिच आई हैड डन। तो मेरी कंट्रीब्यूशन क्या थी? मैंने लिखा ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कैट ड्राइविंग अ कार इन न्यूयॉर्क सिटी इन द स्टाइल ऑफ वैन गॉग इन द फॉर्मेट ऑफ लाइन ड्राइंग। तो मैंने उसको 5 चीजें बता दी, उसके बाद उसने जनरेट करके दे दिया। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन तो मेरी भी है, ठीक है ना, मेरी या जो भी ऐसे कर रहा है। So the human being has some contribution and the machine has some contribution. तो आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों contributions मेरिट करते हैं प्रोटेक्शन या नहीं? Yes, sir. Both.
because you cannot only think or imagine dash dash dash. When देखिए the मुझे तो machine ड्राइंग will करनी नहीं support आती you, है, ठीक है, yes, आई डोंट when नो हाउ machine टू will ड्रॉ support them. एंड आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम मशीन। तो जो रिजल्टेंट वर्क है, क्या वो मैं उसे कह सकता हूँ कि मेरा है? मुश्किल होगा ना कहना। Yes. Yes, Yes, sir. very Yes, difficult. sir. It will be really difficult because मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती है। It will be too much to give me copyright on that drawing, on that painting. वो बहुत अनफॉर्चुनेट, अनफेयर, ऐसा लगता है अनफेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो एक क्वेश्चन है कि ऑथरशिप। दूसरा क्वेश्चन इसमें इंटरट्वाइंड ये है कि भी इसमें कोई भी ऑथर कैसे हो सकता है? अगर मशीन ने हजारों जगह से उसे उठा लिया है थोड़ा 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 थोड़ा, तो ऑथर कोई भी नहीं बन सकता, तो वो चोरी है। दैट इज अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की थी। तीसरी चीज है कि अगर मशीन को ट्रेन कर दिया गया है और हम कहें कि हम मान लें अभी फिलहाल, लेट अस अभी दिस क्वेश्चन इज येट टू बी डिसाइडेड, बट मान लें कि चलिए उसे ट्रेन किया गया है, ठीक है, तो उसने कहीं से उठाया नहीं है, चुराया नहीं है, हूबहू लिया नहीं है, तो फिर किसका होगा? फिर तो क्वेश्चन आएगा ना हमारे पास। मान लो कल को कोर्ट ये डिसाइड कर देता है, इंटरनेशनली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मशीन ने किसी से नहीं लिया, इसने तो सीख लिया है, फिर तो किसका फिर होगा? सर इन दैट केस वो ट्रेनर जिसने वो ट्रेनिंग उस मशीन को दी है। So that means the trainer of the machine, the generate that software, that machine. Okay, this is one option. This is one option with us. ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि देखिए, जब मैंने मशीन को खरीद ही लिया है आपसे, किसी ने ट्रेन किया है उसके, जो मैंने ले, खरीदने का मतलब है आपने यूज के लिए रखा इंटरनेट पर, मैंने यूज कर लिया उसे, तो मैंने यूज किया, तो देखिए मेरा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवाल इसमें, अभी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। मैं आपको कोई ऐसे ही जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इट इज स्टिल इन द एरिना ऑफ डिबेट। इट इज इम्पोर्टेंट, जवाब देने से इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें एंड बी अ पार्टिसिपेंट इन द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब देखिए, आपको मैं केस बताता हूँ जो हुआ। यूएस कॉपीराइट ऑफिस रजिस्टर्ड अ वर्क प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर दैट इज कॉल्ड मिड जर्नी। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। सो उससे एक ग्राफिक नॉवल बनाया गया, जारिया ऑफ द टॉप, ठीक है, बाय क्रिस्टीना कैस्टानोवा। एक कॉमिक स्टाइल में था, जिसमें जो शब्द थे, जो वर्डिंग थी, वो सब ऑथर ने लिखी, क्रिस्टीना ने ही लिखी थी। लेकिन उसने क्या किया कि उसने एआई से कुछ इमेजेस जनरेट कर ली, और उसके बाद वो वर्ड्स वहां पर अटैच हो गए, वो भी एआई ने कर दिए। उसके बाद जब ये सब हो गया, तो उसने कॉपीराइट ऑफिस में ये to register copyright, she filed an application, and the Copyright Office registered copyright in her favor on that book, on that comic book, जो भी इसे कहेंगे आप, illustrative या comic या whatever. So illustrative graphic novel जो था, उसके ऊपर उनको वो मिल गया copyright. After you pursue copyright which was granted, ठीक है, वो कर ही सकते हैं। जब आप ग्रांट कर सकते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है ना। उन्हें लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें ये फैक्ट्स पता नहीं थे, या हमसे गलती हो गई, वट एवर बी द रीजन, so they withdrew. They said you have copyright only on the text that you had written, not on the accompanying images that you generated with the help of AI. Christina argued that, well, I generated those images. The Copyright Office said, no, we are not ready to grant you copyright on that. All right, so the matter will be elongated. Of course, she will appeal in the court and all that. That is continuing. But this is a decision, a final decision by Copyright Office of a particular kind. ठीक है, आपको ठीक लगता है ये डिसीजन कि कॉपीराइट ऑफिस ने कहा कि कॉपीराइट जो आपने लिखा है उस पर है, जो आपने ड्रॉ किया है मिड जर्नी एआई से, उस पर आपका अधिकार नहीं है? आपको ठीक लगता है ये डिसीजन? यस सर। Okay. Then the camera and photograph we have already taken with the help of Naruto monkey selfie case. All right. So all these questions are, now we come to another aspect, that is the aspect of originality. Now the work must be original
for copyright protectability, the work must be original. And originality is the paramount concept within copyright law. We all know that you require originality for all the works, all the first 4 category of works, but not specifically mentioned for sound records. These two, B and C, they are based on first category, A category of works. All right. So originality has already been tested in A. So why test it in B and C? That is the logic of the statutory language. So that means originality is something which is seminal, which is fundamental. Can AI be original? ठीक है ना? So अब आप ये देखिए न्यू एंड ओरिजिनल में आपके सामने 4 मॉडल्स हैं. कौन सा मॉडल आपको सही लगता है? एक कॉन्सेप्ट है न्यूनेस का, एक कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल का. 1 2 3 सही है. कौन सा सही है? सेकंड सर. अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मेरे सामने ना कुछ फ्लैश हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं या कमेंट्स लिख रहे हैं, तो मैं प्रेजेंटेशन देते देते उनको नहीं पढ़ पा रहा. ठीक है ना? तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके कमेंट्स को. सो आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू दोस. ठीक है? सो ओरिजिनल क्या, which model do you think is the best representative? फोर्थ. Second one. Second. I feel fourth. So the only correct one is the second one, because everything that is new is original, but everything that is new is definitely original, but everything that is original need not necessarily be new. All right. So then there are various dimensions of originality. First is the meaning of originality. We say that the work must originate from the author. The author we must trace the origin of the work to the author. It is different from novelty, of course, that we have seen. Then there are various tests of originality, that the work must not be copied. If it is copied, then it is anything but original. And then further test is that independent labor must. Now what we have seen in case of AI is that if AI is copying a little bit from so many sources, just because the number of sources from which AI is copying, if it is copying, doesn't matter whether you copy from one place or from 1 million places, copy remains a copy. So if there is no independent skill and judgment, then of course it cannot be, cannot be originality. And if there is no originality, then there cannot be any copyright. Then another dimension of originality is identity. Require originality in expression and not necessarily in ideas. That means you are free to derive ideas as far as copyright is concerned. We will test your originality only on your expression. So when we saw the works generated by copyright or by artificial intelligence, then we have to see whether it is the expression of AI or it is the expression of somebody else. If it is somebody else's expression, doesn't matter, AI has memorized it or derived it in whatever way, it will not be original AI. There are standards. There are 2 dominant standards in the world: sweat of the brow and modicum of creativity. All right. So whatever the standard may be, we have to see it has to be fitted. The work has to be fitted into at least one of these 2. Whether a particular country follows sweat of the brow doctrine or modicum of creativity, at least one of these, it should pass the test, pass the standard of originality. And if not, it cannot be described as copyright. So to examine the works generated by AI on all these parameters to find out, so these are complex analysis, and the world is engaging itself into this exercise. All right. So again, the question is that copyright belongs to whom? The creator of AI, the user of AI, to AI itself, or to none? Because if we say that this work is just a copy from here and there, then it belongs to none. Then we need not search for the author. All right. Then we have to see whose work has been infringed.
then we may say that another question, who is the infringer? And that comes, if at all it is an infringement, because it depends on facts. Now, for example, if a particular software or AI scans through only public domain files, then of course it can. There is no infringement of copyright as such because वो public domain में थी files सब. लेकिन उससे भी उसको करने से वो author नहीं बन. All not infringement, but at the same time we can't say wherever there is no infringement there is always an authorship. It is not necessarily so. All these questions are pretty complex, and the world is debating on these questions right now. And let us participate. I had some more, slides, but I think I'm run out of my time, so I will just jump to the conclusion. AI models require human beings to keep feeding it for these AI models to get better. So I will only do so much. When these AI models start to hurt the very people who generate the data that it feeds on, that is the artists, it's destroying its own future. Because AI can never exist in antagonization by antagonizing the artists, by creators. Because it is the creators on whose work AI has been fed, AI has been trained. And today, if somebody says that, okay, we don't need artists now because now there is AI, I think that is it is in the best interest of AI models and model creators to help preserve these industries so that there is a sustainable cycle of creativity and improvement for the models also. So that also necessitates real artists in the world. We can't just depend upon AI for all our needs. So this is all that I wanted to say, and I have exhausted my time. If you have any questions, then I'll be glad to respond to them. Yes, sir. Participants, anyone has any questions? Sir, Sir, I is have there no question, but I want to say we have to wait for the limitation parameters which will be given by the government or any competent authority. Then we will come to conclusion what is the boundary for AI. Is it right, Yeah. sir? Right now we cannot Things are in a conclude this, sir. flux, and we are just waiting, but at the same time, not just waiting, we are participating also, because we ourselves have to answer these questions. The answers will not be dictated to us. Yes. Sir, can We have AI to say that and given such. Yeah, go ahead. Sir, can AI models be clothed with legal personality to solve all these problems of ownership? Yeah, it has been tried at various places, but this has not succeeded till now. Imbuing AI with a legal personality has not been successful, greatly successful, I would say. Even if it has been done in a very circuitous manner. Right? So in Naruto's case, we discussed that US court was not ready to clothe a monkey with personality. Now AI is a step even further to that. Of course, we don't know what future has in store for us, but as of now, I don't think that we can solve the question by this route. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Because then, if we say that yes, AI has legal personality, then AI can also be an infringer. Then how will you punish? Yeah. Question. It We have will to act trace through its everything. manager. Yeah, please go ahead. I didn't follow. It will act through its manager, just like a idol deals with outside world That through is- its. That is possible. That is possible. Of course, that is possible. We will have to say, then we have to define rights, and at the same time, we have to define the liability also. Yeah, Who has the participants. liability? Yeah. Yes, sir. So we have our speaker who has already joined for the next Go ahead. session. I'll have to, cut short the session. Yeah. It's okay. Yeah. Sir, I would just like to offer a vote of thanks. So on behalf of the Postgraduate Teaching Department of Law, RTMNU, I would like to extend my heartfelt gratitude
to your sir yourself. It was really very nice to hear you on the very innovative topic that we had for today. I think this session will help our many research scholars to decide on their research topic relating to artificial intelligence and copyright. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. It was nice discussing with you. Thank you, sir.